Hello students, in this video I am going to read and explain the poem The Noble Nature that is written by Ben Jonson. Let's know something about the poet of the poem, Ben Jonson. He was an English playwright, poet and literary critic of the 17th century. He is best known for the satirical plays and generally regarded as the second most important English dramatist after William Shakespeare. In the poem The Noble Nature, the poet Ben Jonson highlights the qualities that a man must possess to be considered as noble. To explain this, he compares man to both an oak tree and a delicate lily flower. He explains growing physically like a bulky tree or living long like a sturdy oak does not make a man a noble being. The poet feels that a meaningful life like the lily flower, though short, is what makes a man noble, and even though a man's life is short, it can be a perfect life. इस पोएम में बेन जॉनसन ने हमारी लाइफ को एक ओक ट्री और एक छोटे से डेलिकेट लिली फ्लावर के साथ कंपेयर किया है और कंपैरिजन के बाद ये बताने की कोशिश की है कि अगर लाइफ लिली फ्लावर की तरह छोटी है, शॉर्ट है, वो भी परफेक्ट हो सकती है अगर उसको हम अच्छे से दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं. वेल, let's start with the text. A lily of a day is fairer far in May. Although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. In small proportions, we just beauties see, and in short measures, life may perfect be. Now, in these lines, the poet talks about what makes a man noble. He compares the man to a delicate lily plant. The lily plant has a short life. It blooms in May and looks very beautiful. Although the flower has the lifespan of a day and falls and dies by nightfall, it spreads beauty and delight in that short period. Here, the poet feels that a meaningful life like the lily flower, though short, is what makes a man noble, and even though man's life is short, it can be a perfect life. In the very first stanza, poet क्या समझाना चाह रहे हैं? बेन जॉनसन अपनी इन लाइन्स के थ्रू समझाना चाह रहे हैं कि अगर एक मैन की लाइफ एक लिली फ्लावर की लाइफ की तरह छोटी है, शॉर्ट टाइम के लिए है, लेकिन मीनिंगफुल है. लाइफ में अगर हमने कुछ अच्छा काम किया, मीनिंगफुल लाइफ है, अगर वो शॉर्ट भी है तो भी उस लाइफ को याद किया जाएगा. इसलिए छोटी लाइफ को भी परफेक्ट कहा जा सकता है अगर वो लाइफ हमारी मीनिंगफुल है. नाउ द सेकंड स्टेंजा. It is not growing like a tree, in bulk doth make better be, or standing long an oak 300 year to fall a log at last, dry, bald and sere. Here bald means without leaves. Now in the next few lines, the poet compares man to a sturdy oak. He explains that growing physically like a bulky tree or living long like a sturdy oak doesn't make a man a noble being. The huge, strong and aged oak
will soon become a lifeless, dry, and withered. Withered here means dry. Dry piece of log. Dry piece of a wooden piece of log. Here the poet wants to say life अगर कंपेयर की जाए एक ओक ट्री के साथ, एक ओक ट्री जो सालों तक बढ़ता रहता है, उसकी लंबाई बढ़ती रहती है, लेकिन लास्ट में अंत कैसा होता है, उसका एंड कैसा होता है, एंड में वो एक ड्राई पीस ऑफ लॉग बनकर रह जाता है। बहुत सालों तक जीने के बाद उसकी लाइफ एंड कैसे होती है, विदाउट लीव्स, एक सूखा हुआ ट्रंक रह जाता है और बाद में वो टूट जाता है, बिखर जाता है। इस तरह से एक हमारी जो लाइफ है ओक ट्री की तरह अगर वर्थलेस है, मीनिंगलेस है, इतने साल जीने के बाद भी उसका कोई भी वर्थ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर एक मैन की लाइफ, ह्यूमन बींग्स की लाइफ शॉर्ट है लाइक अ लिली फ्लावर, इट कैन बी अ परफेक्ट लाइफ, इट कैन बी अ वेरी गुड मीनिंगफुल लाइफ। नाउ let's evaluate and analyze the poem for its better understanding. बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको और इवेल्यूएट करेंगे कि इसमें कौन कौन से राइमिंग स्कीम कौन सी यूज़ की गई है। मीन्स इन अदर वर्ड्स critical appreciation. I am going to discuss the critical appreciation of this poem. Now, first is rhyming scheme. Rhyming scheme is the ordered pattern of rhymes at the ends of the lines of a poem or a verse, and in this poem the rhyming scheme is AA, BB, CC, DD and AA. Here rhyming scheme is the ordered pattern of rhymes at the ends of the lines. Line की end में जो rhymes होती हैं अगर वो सिमिलर हैं तो उनको जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में पैटर्न यूज़ हुआ है ए, थर्ड एंड फोर्थ में बी बी, जो इनका एंडिंग वर्ड है वो सेम है, उसका राइमिंग स्कीम सेम है, दैट इज ए बी बी सी सी डी डी एंड ए। नेक्स्ट इज सिमिली. Simile is a figure of speech involving the comparison of one thing with another thing of a different kind. जब हम कंपैरिजन सेट करते हैं किसी और चीज़ के साथ, दैट इज सिमिली. हियर सिमिली इज यूज्ड इन दिस पोएम लाइक अ ट्री. Like a tree, we can see the figure of speech simile in these words, like a tree. Now next is metaphor. Metaphor is a figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action to which it is literally applicable. In other words, a thing symbolic of something. जब किसी और चीज़ के सिंबल को किसी और चीज़ के थ्रू दिखाया जाता है, दैट इज मेटाफर. हियर इट इज़ यूज्ड अ लिली ऑफ अ डे. मेटाफर इज यूज्ड अ लिली ऑफ अ डे. नाउ नेक्स्ट इज alliteration. Alliteration means the occurrence of the same letter or sound at the beginning or closely connected words. जब सेम वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, अल्फ़ाबेट को यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज़ यूज्ड इन दिस पोएम. हाउ? ओ स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years to fall a log, at last dry, bald and sere, a lily of a day. In these lines, L in long, L, log, last and lily. L is used again and again. It means alliteration has been used here. And in next lines is fairer far in May, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. Here the repetition of F can be seen. Fairer F, far F, fall, flower and
Next is flower fair fall. So here alliteration has been used. Now next is philosophical tone has been used here, means philosophical tone with moral lesson, and the moral here is life should be worth, life should be remembering always, and life should be meaningful. In this poem the moral has been given that life should be worthful, means meaningful. And now contrast. Here in this poem, contrast is between life and an oak tree and a short-lived lily flower. Dear students, remember it is a lyrical poem, means it is a lyric of few lines, means we can sing this poem, and its language is very simple and modern. It is a nature poem explaining the life of man through the different entities of nature. Alright students, I hope you understood the poem. That's it for today. Thank you.